the picture over here, it talks about the team building. R.N. Tagore has said, the problem is not to wipe out the differences, but how to unite with the differences intact. Team building is must for any organization. It has been said that if you go through the letters team, T stands for together, E for everyone, A for achieve, M for more. Together, everyone achieves more. It means that if we work with a team, whatever the goal will be decided by the organization, we can achieve that. And for this, there are 4 pillars for building team. The 4 pillars are: one is the sacrifice. The second is the to accept and respect the differences. Third is the mutual trust. And fourth is the cooperation and coordination. If these 4 pillars are being followed in any organization, a team will be created. Sacrifice is put at the foremost position. Why? Because when you are going to achieve any goal of organization, you have to work hard. It can be also that you have to work 24 hours also. You have to sacrifice many things. Your feelings may be sacrificed, your family may be sacrificed, whatever your time will be sacrificed. And once the sacrifice will be there, naturally you will be concentrated on your goal only. Second is the to accept and respect the differences. Why I am saying this, that कि in a team तरह-तरह के लोग होंगे, विभिन्न प्रकार के लोग होंगे. हो सकता है कि वो आपके विचार से मिलते भी ना हो, लेकिन उनको समावेश करना है आपको, उनको साथ लेकर चलना है, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को समझना है, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है और आदर भी देने हैं उनके भावनाओं को. और जब इस तरह की विचारधारा एक लीडर में होती है, तब वो एक सही टीम बनाने में कामयाब होता है. थर्ड इज द म्यूचुअल ट्रस्ट. टीम मेंबर्स में ट्रस्ट होना चाहिए कि वंस द वर्क इज गिवन टू दैट पर्सन, he will finish that work with full devotion. He will work diligently for this. और जब ट्रस्ट होता है, तब क्या होता है कि जो व्यक्ति को जो वर्क दिया जाता है, वो बहुत इंडिपेंडेंटली सही ढंग से काम करता है. वो अपना फुल टाइम, फुल स्ट्रेंथ, फुल कैपेबिलिटी का प्रयोग कर पाता है. तो म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और लास्ट है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सहयोग एंड समन्वय.